Jai Hind, my dear children. Welcome back. In last class, we studied some grammar points. I think everybody understood all the points. Today, also we can study a lesson, that is a story. So the name of the story is Dukh Ka Adhikar. See, this story is a beautiful, emotional and a heart-touching story. So before studying the lesson, you must take your textbook and a pen. Note down all the points. Okay? Get ready for studying the story. मेरे प्यारे बच्चों, दुखी होने का अधिकार सभी को है या नहीं? जस्ट सोच लो. See, दुखी होने का अधिकार सभी को नहीं है. Here, our author यशपाल जी दुख का अधिकार के बारे में हमसे कहना चाहते हैं एक कहानी के द्वारा. Shall we study now? Yes. अब हम यशपाल जी का परिचय देखें. यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ. आपकी भाषा बहुत प्रभावशाली है. आपकी कहानियों में व्यंग्य देखने को मिलती है. प्रस्तुत कहानी दुख का अधिकार देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है. Now we can study our lesson. दुख का अधिकार. मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है. Here पोशाक means कपड़ा, but कपड़ा in the sense dress. See, मनुष्यों की पोशाकें The dress of human beings उन्हें विभिन्न श्रेणियों में, श्रेणी means level, विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है. Dividing, that means the dress is categorizing our level. According to our dressing, people can assess us, no? Whether we are rich or poor. See next line. प्रायः पोशाक ही समाज के मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है. प्रायः मीन्स यूजुअली ये पोशाक, ये कपड़ा ही समाज में मनुष्य का अधिकार मीन्स पावर और उसकी दर्जा मीन्स क्लास और लेवल निश्चित करती है. मीन्स यूजुअली इन आवर सोसाइटी ऑल्सो द ड्रेस हैज ए ग्रेट रोल. इट इज गिविंग द पावर एंड स्टेटस फॉर एवरीवन. सी, वन policeman is coming for a function. Surely he will get a seat. There somebody will provide a chair for him because easily we can identify him through the dressing. So like that we can say that if our dress is good, people will respect us. If the dress is not good, people will consider as a poor person. Next line. वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है. See, it is the dress is opening the closed doors. परंतु ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणी की अनुभूति को समझना चाहते हैं. परंतु ऐसी भी परिस्थिति, this situation is also coming. हम जरा नीचे झुककर मीन्स टू बेंड आवर हेड. समाज की निचली मीन्स निम्न श्रेणी मीन्स लो क्लास पीपल की अनुभूति क्या है? फीलिंग्स को समझना चाहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग? सी, समटाइम्स वी वांट टू बेंड आवर फेस और हेड टू नो द लो क्लास पीपल्स फीलिंग ऑल्सो. सो उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है. इन दैट टाइम ये पोशाक, ड्रेस विल बिकम बंधन. बंधन मीन्स दैट ऑब्स्टेकल. लाइक दैट अड़चन मीन्स ऑल्सो ऑब्स्टेकल. सो एक्चुअली we are eager to know others' feelings, but there the problem is poshak means dressing.
the dressing will be a bandhan or disturbance, or action means obstacle or the restriction. See next line. जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरा जाने देती. See here, patang means kite. Vayu ki lehre means the air is not allowing the kite to fall down. See like that. खास परिस्थितियों means in special situation हमारी पोशाक a dressing हमें चुक सकना means to bend our head से रोक के जाती है. It is what disturbing to bend our head. So in special situation the dress is not allowing to bend our head. In that situation we are trying to escape from the place. That only happening. So dress has a great role in our life. Now we can study the second paragraph. बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे. See, so now we can see a बाजार means market. उसमें फुटपाथ पर कुछ खरबूजे. What do you mean by खरबूजे? खरबूजे means watermelon. So watermelon डलिया means basket. और जमीन means the floor. बिक्री के means sell के लिए रखे जान पड़ते हैं. That means in the market we can see a footpath. There कुछ watermelons are there. Some watermelons are inside the basket and some are क्या है? Some are in the floor. That means क्या है? For selling some watermelons are there. See, वहाँ रखे जान पड़ते हैं means keeping. That means क्या है? The story start like this. Some खरबूजे, the watermelons are there for selling. खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी. So there we can see खरबूजे के समीप means pass or near to the watermelon. एक अधेड़ उम्र की औरत. अधेड़ उम्र means middle aged. That means above 50, 55, 60 that range. Okay. अधेड़ उम्र की middle aged औरत means lady बैठी है और रो रही थी. So one lady is sitting there and crying. That means see near the watermelon we can see a middle aged lady and she is crying. So some reason will be there, no? खरबूजे बिक्री के लिए थे. See, these watermelons are for what? बिक्री means selling. परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता? See, this lady is crying. So the watermelons बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए means to buy this watermelons. कोई कैसे आगे बढ़ता means nobody is coming forward to buy the watermelon. Why? Because the lady is crying. That's why no one is coming forward. Then खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए. How she is sitting? See, खरबूजों को बेचने वाली, the person who is selling for selling the watermelon, वो कपड़े से मुंह छिपाए means she is closing her mouth with some cloth. That means with a sari or something. Sir means head को. घुटना means knee. Knee. घुटना पर रखे. See, she is keeping her head where she is keeping her hair in घुटना means knee पर रखे. फफक कर रो रही थी. She is फफक कर means crying too much. She is crying too much. One lady is sitting in the market with a watermelon and she is crying too much. So nobody is coming to buy the watermelon. Is it clear now? Next we can see पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से
उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे. See here, the author is passing through the way. Then he saw the lady is crying and selling watermelon. Then पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर, तख्त में seated, some people were sitting near the shop, और some people बाजार में खड़े, some people were standing near the market. So these two people, this means पड़ोस की दुकानों में बैठे और बाजार में खड़े ये लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे. They were commenting badly about this lady. उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सा उठी. So by looking the condition of this lady, other also felt some sorrow. पर उनके रोने का कारण जानने का उपाय क्या है? See, how can he know the reason why this lady is crying? Other is thinking actually he want to know the reason, but he is not able to approach the lady. Why? Because फुटपाथ पर उनके सामने बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई है. Here, see here, author is saying about फुटपाथ पर उनके सामने बैठ सकने. Actually, he want to sit near the lady, but मेरी पोशाक, my dress, यहाँ व्यवधान means disturbance और obstacle बनकर खड़ी हो गई है. See, in first para we discuss about the dressing. If we are in good dress, the people will think as we are rich people. Here our author is a well-known person. He is well dressed, so in front of others he is not able to approach the lady. That's why he is not approaching, but actually he want to know why she is crying. Then एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा. One person what commenting badly क्या करता है? वो थूकते में spitting and saying, क्या जमाना है, what a life, what a world. जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता. सी उनका जवान बेटे, जवान मीन्स नॉट सोल्जियर, जवान मीन्स यंग एनर्जेटिक लड़के मरे, उनका वो बेटे का क्या हो गया, मृत्यु हो गया. सो मृत्यु हो गई, वो पूरा दिन नहीं बीता. सी दैट डे इज नॉट ओवर. दैट मीन्स yesterday or day before yesterday only that death happened. और यह बहया दुकान लगा बैठी है. ये लेडी क्या करती है? शी इज मेकिंग द शॉप. हियर शी इज सेलिंग द वाटरमेलन. देन दूसरे साहब अपनी दाढ़ी गुजारते हुए कह रहे थे. अनदर पर्सन वो अपनी दाढ़ी गुजारते मीन्स टचिंग द दाढ़ी एंड सेज, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है. सी ऐसी नियत मीन्स आशय, और वो बरकत मीन्स प्रॉफिट. सी लाभ, in the sense, see, as per our work the God will give us the profit, or God will give the result. So here the person is commenting like this, the lady is very bad, that's why she got this type of one experience. Actually the lady is not good, but the person is commenting like this. Then सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान गुजारते हुए कहा. Then another person, he was also standing the footpath, who is commenting what diya salai ki thi. Diya salai is a rope which we can see near the shop to burn the cigarette or something. For smoking these people are using. So he is taking the rope and kaan guzate, he is cleaning the ear and says, that means neglecting this lady, and says, अरे इन लोगों को क्या है? See, for these people what? ये कमीने लोग, these bad people, रोटी के टुकड़े पर for getting रोटी जान भी देते हैं. They will give even their जान means life for to fill their stomach. They will give even their life. इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है. For these people everything, बेटा बेटी means पुत्र या पुत्री, खसम लुगाई means husband wife relation, then धर्म ईमान their religion and faith सब रोटी का टुकड़ा है. That means they are not giving any importance to their husband or putra or putri or their religion or faith. They are only want to fill their stomach. Then
परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा. Then another one, परचून की दुकान means a grocery shop, no? So वहाँ लाला जी खड़े हैं. वो he said, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो. For these people, मरे या जिए means मृत्यु हो गया या जीता है कि कोई मतलब न हो. Means they are not giving any importance to life or death. Everything is same for them. पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए. They want to take care of others धर्म and ईमान. They want to take care of others religion and they want to take care of others faith. Is it so? जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है. Here जवान बेटे means young person, young बेटे का मृत्यु के 13 दिन का सूतक. See here, सूतक is a new term for you. See, सूतक means किसी के मृत्यु के बाद घर वाले बाहर नहीं जाएंगे. That thing means here also in our India also, after the death of any family member, the people will not go outside for 16 days. In North India, they are following 13 days. That is सूतक. Here, so ये मरने पर 13 दिन का सूतक होता है. For this lady also having this thing सूतक because the बेटा मर गया. और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है. Here this lady, what she is doing? वो बाजार में आकर she came to the market and selling watermelons. 1000 आदमी आते जाते हैं. See, thousands of people are coming and going. कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है? See, the people who are coming and going, they don't know about the matter of this lady. Suppose they will touch the lady, then क्या हो जाएगा? See, कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? See, suppose somebody is buying the kharbuza watermelon and they are eating this, then what will be the condition of their faith or religion? So these are the comments of our Lala ji. See, yeah, क्या अंधेर है? This last he is saying, is the lady is a blind person? Is the lady having the what very bold character? She's a very bold character lady. See, like that he is commenting very badly. Next para, see. पास पड़ोस की दुकानों में पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था. See, now our author is very eager to know about this lady. So he asked to other shopkeeper. Then other said, उनका 23 बरस का जवान लड़का था. So this lady is having one लड़का means एक पुत्र का आयु कितनी है? 23 means 23 year boy. घर में उसकी बहू और पोता पोती भी है. See, here he is married, 23 year boy. वो जवान किसका? उसका क्या है? उसके लिए एक बहू भी है. Means there one wife is there. बहू means daughter-in-law of this old lady. That means wife of our this लड़का. वो then पोता पोती. See, पोता पोती means क्या है? Grandson and granddaughter. See, now you want to know the लड़का का नाम. इस लड़का का नाम है भगवाना. Not भगवान God. No, the name is भगवाना. See, ये लड़के का वाइफ है and पुत्र and पुत्री. See, ये लड़का क्या करते थे? लड़का शहर के पास ठेठ बीघा पर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था. What was his work? वो लड़का शहर के पास near the town ठेठ बीघा. ठेठ means 1.5. बीघा in the sense acre. See, in 1.5 acre, he was doing some kachiyari. Kachiyari means agriculture, cultivation. He was doing some agriculture. Which agriculture he was doing? He was cultivating the watermelon. इस प्रकार वह परिवार का निर्वाह करता. He was doing this cultivation and परिवार का निर्वाह in the sense taking care of the family. He was working in the field and taking care of the family. Then one day क्या हुआ?
खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाकर काफी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता. So what he was doing? He was taking the dalia. Dalia means basket. He was taking the full basket full of watermelon. So he is bringing to the market. And काफी ये लड़का क्या करता था, ये भगवान स्वयं सौदे मीन्स गुड्स. हियर गुड्स क्या है, वाटरमेलन. इस वाटरमेलन के पास बैठ जाता. ही सिटिंग देयर एंड काफी माँ बैठ जाते. समटाइम्स द मदर विल सिट फॉर सेलिंग एंड समटाइम्स दैट सन वाज सिटिंग टू सेल द वाटरमेलन. लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पक्के खरबूजे चुन रहा था. So what happened actually? This putra परसों means day before yesterday. ये सुबह means morning. मुंह अंधेरे बेलों में से. So early morning he was picking the पक्के खरबूजे. He was taking the पक्का watermelon. चुन रहे थे. He was picking the watermelon. Then गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लटके का पैर पड़ गया. सो क्या हुआ, गीली मेड़ मीन्स इन द बॉर्डर कि इसकी तरावट मीन्स शीतलता, इन दैट कूलनेस. क्या करता था, विश्राम करते हुए एक सांप ने मीन्स एक स्नेक इस लटके का पैर पर क्या पड़ गया. दैट मीन्स दिस बॉय वाज वॉकिंग and अचानक में क्या हुआ, he touched the body of that snake. सांप ने लटके को ठस लिया. ये सांप ने, this snake ने क्या किया, bite the boy. Then you know the condition, surely the boy will die, no? Yes, here also that happened, that is going to happen. लटके की बुढ़िया माँ बावली होकर ओछा को बुला लाई. So here the boy is not conscious. That's why the बुढ़िया means the old lady क्या करते हैं, बावली होकर, बावली means become mad. So वो क्या करती है, ओछा को बुला लाई. ओछा means doctor. That means सादा village doctor in the sense just like Vaidya. See here just like a sannyasi who is ready to take the poison. So he brought the ocha. वो छाड़ना फूंकना हुआ. That person is trying to take the छाड़ना फूंकना means trying to take the poison. Then नागदेव की पूजा हुई. नागदेव means the नागदेव, you know, the god of snake. So उसकी पूजा हुई, प्रार्थना हुई. पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए. So for doing this all puja, what is needed? Dana dakshina. We want to dedicate something for that god. That all needed. घर में जो कुछ आटा अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया. Means they are taking the full atta, wheat or what are the items there. Everything they are taking it for this purpose, for the recovery of this Bhagavana. माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर रोए. See here mother, wife and children, they are embracing Bhagavana and crying too much. They cannot suffer this. See, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला. See, for a moment he looked. Then without saying anything, he closed his eyes. सर्प के विष से उसका सब बदन मीन्स बॉडी काला पड़ गया था. become black. That means the full body become black because of the poison of the snake. जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है. Here the author is saying, psychologically he is saying, जिंदा आदमी means who is having जीव. See, वो नंगा भी रह सकता है means he can live as naked. Suppose no money is there to buy a cloth, he can live as naked. परंतु मुर्दे को, मुर्दा मीन्स डाइड पर्सन को नंगा अगेन naked विदा किया जाए. How can? See, we cannot send him, we cannot send a died person without dress, without new dress.
See, that is after death we are sending the body and soul with a new dress. That you know? Yes. If we are a rich person or a poor person, we have to follow the system of our religion. So here also here उसके लिए बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा. Here Bajaj means one owner, one shopkeeper. So they need to buy a new dress from Bajaj shop. चाहे उसके लिए माँ के हाथों के चन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए. So for doing this, see, channi kakana means the ornament which the wife is wearing at the time of marriage, means just like marriage ring, that. So for this purpose even they will sell that ornament to do the rituals. That means they have to follow the system of the society. Here also this middle-aged lady also selling her ornament. Then भगवाना परलोक चला गया. भगवाना क्या हो गया? He died. घर में जो कुछ चूनी फूसा means other eatable items, वो भी थी, सो उसे विदा करने में चलेगी. That items also they are spending it for discrimination. बाप नहीं रहा. Now father is not there for the children, means they lost their father, but they don't know about the seriousness of this. Means this they are small children, no, they are crying too much. और दादी माँ खाने के लिए खरबूजे दिए. See, here the बच्चा they are asking for the food. That's why the grandma is giving खरबूजे. Only in that house only the item is खरबूजे. She gave watermelon. But लेकिन बहू को क्या देती? See, what can she give to बहू? बहू means that wife of भगवाना. See, what can she give? See, उसका बदन means body, बुखार से तवे की तरह तप रहा था. Her body was very hot. It was just like a tawa. See, just like a dosha tawa, no? So it means the body temperature is very high. अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी फी कौन उधार देता? दुवन्नी चवन्नी means daily house matters, means food items. Now nobody is there to help this family. No one is willing to help this family. Nothing is there for eating in that family. Next, see what that lady is doing. बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवान के बैठोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली. See here, और चारा फी क्या था? See here, बुढ़िया रोते रोते means she is crying and walking towards the market. For what purpose? To sell watermelon. See here, भगवान के बैठोरे हुए means which was collected, the watermelons which was collected by our Bhagavana. See, nobody is there to help this family. That's why the mother herself is going outside. बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक रो रही थी. Here बुढ़िया this lady, old lady, खरबूजे बेचने का साहस करके she came here to sell the watermelon. But how she is sitting? सिर पर चादर लपेटे हुए. See, she is covering her face with one cloth and सिर को घुटनों पर टिकाए. She is keeping her head between the knee. वो फफक कर रो रही थी. She is crying too much. See next one. How she is sitting keeping the face in between the knee? Because
because what the people will think, why she is came here. That's why she is sitting like this. Why she came here? Because she want to earn some money. No, she want to give something for the family. Even though son died, she is the responsible person to take care of this family. Again the people are saying some comments. See, कल जिसका बेटा चल बसा आज वो बाजार में सौदा बेचने चली है. See, they are commenting as yesterday only that son died. Then also she came to sell the watermelon. See, हाय रे पत्थर दिल. See, this lady का मन कैसा है? Just like a पत्थर. पत्थर means stone. दिल means mind. They are commenting as her mind is just like stone. उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा. Now the people are comparing another lady, one rich lady and this old lady. See, उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा means measure. They are measuring the dukha. See, पिछले साल last year another lady's son also died. Now they are comparing this lady with another lady who also lost her son last year. How she was, वो संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 28 मास तक पलंग से उठ न सकी. That lady, संभ्रांत महिला in the sense, वो she was behaving as a mad fellow. वो पुत्र की मृत्यु के बाद after the death of the son, she 28 मास तक, see 28 मास वो पलंग means bed से न उठ सका. She was not coming forward, or she was full time she was lying there and full time crying. उन्हें 15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाते थे. See, in between 15 minutes means in between 15 minutes what was I? वो मूर्छा means unconscious. She become unconscious. मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते. See, if she is conscious, that time full आंसू means tears. She was crying. Then दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठ रहे थे. See, 2 doctors are there to take care of this lady, to help this lady. 2 doctors are there. उनके हरदम means always. सिरहाने means near the bed. The 2 doctors were sitting near the bed. That's why she was full time crying and she become unconscious. So many are there to help this lady. That's why full time she was crying. Then शहर भर के लोगों के मन में पुत्र शोक से द्रवित हो उठे. See, is because here this lady was full time क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है. सो दो डॉक्टर उनके साथ बैठ रहा है. हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी. ऑलवेज दे आर कीपिंग सम बर्फ मीन्स आइस. Why? Because the temperature is very high. To decrease the temperature, they are keeping some ice there. शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे. See, other people also they were also watching the scene and they also become very sad because of this rich lady's sorrow. Then, जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं. We are also doing like that. If we have no solution, what we are doing? We are trying to escape from that place. Just like that. Here our author also trying to escape because he is not able to help this lady. That's why he is trying to escape from that place. जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, there is no solution, तो बेचैनी मीन्स रेस्टलेस से कदम मीन्स स्टेप्स तेज हो जाते हैं. द स्टेप्स विल बी फास्ट. दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द प्लेस.
उसी हालत में नाक ऊपर उठाए मीन्स जस्ट लुकिंग अबव ही इज लुकिंग अबव एंड राह चलतों मीन्स अदर पीपल से टोकरों खाता मीन्स टॉकिंग सम अदर मैटर में चला जा रहा था. Our writer is also talking with other people and trying to escape from the place. So even the author is also not willing to help this lady. All are there to comment only. My dear children, actually both of them lost their son. But one is very rich, that's why full-time lying on bed. So many are there to treat this lady. But in the same way, this lady, that means our Bhagavana's mother, in Bhagavana's mother's case, nobody is there to help. That's why she want to come outside to sell the watermelon. Then next we can see the other line. शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है. शोक करना टू बिकम सैड, और उसके लिए क्या चाहिए? एक सहूलियत चाहिए. मीन्स सहूलियत मीन्स फैसिलिटी. इफ फैसिलिटी इज देयर वी विल शो मोर. सी दुखी होने का भी एक अधिकार होता है. इफ वी हैव फैसिलिटी वी विल सेलिब्रेट एवरीथिंग. नो, if we are rich we will celebrate birthday. The same way, if so many are there to support us, we will become more lazy. So we will think as others are there to take care of us. No? But here nobody is there to support this lady. That's why she came outside by hiding her face and by hiding her all the sorrows. See, people are there to comment, but nobody is there to support. Same as in our area also, people will comment without knowing the reason. No, nobody will be there to support anyone. Is it true, children? Yes. So, दुख का अधिकार लेसन हमें क्या सीख देती है? क्या सीख देती है? My dear ones, do you like this story? I think yes. From this story, we can say some points. We should be very sympathetic to others. Then, next point, don't comment without knowing the reason. Then, another point we can say, everyone have the same right in our world to laugh and cry. Is it so? Yes. So, children, इस कहानी का संदेश क्या है? दुख मनाने का अधिकार हमें देना है. मीन्स वी शुड गिव द राइट टू क्राई टू एवरीवन. सी एवरीवन हैव द सेम राइट इन द वर्ल्ड टू लाफ एंड क्राई. देन अनदर वन व्हाट वी कैन से, गरीबों के प्रति हम सहानुभूति दिखाना है. मीन्स वी हैव टू बी सिंपैथेटिक टू अदर्स. द नेक्स्ट वन व्हाट वी कैन से, अंधविश्वास को छोड़ना है. मीन्स what we have to do? We have to throw the unwanted superstitions. These are we have to follow. Okay, children? To be sympathetic to others. Don't comment without knowing the reason. So, just like us, everyone have the same right in the world to laugh and cry. Okay, children? Will you follow this? Will you study this? Okay, bye. Thank you.